Then it comes to the SQL. SQL is basically a structured query language. It was designed such a way to handle data. If you ask me that, अभी तो आपने बोला था कि Excel भी data handle ही करता है, but SQL it basically helps us to pull data from a large database. अब जैसे MNCs होती है, काफी बड़े बड़े कंपनीज होती है, तो इनके डेटाबेसेस काफी बड़े होते हैं. तुम लोग किसी वेबसाइट पे घूम रहे हो, क्लिक कर रहे हो, उस चीज का टाइम स्टैम्प उस क्लिक को भी नोट किया जाता है. So those databases are updated on real time basis. So if you want to apply some sort of logic or filter, you can't just pull the whole data from the past history of that company and apply on it. So we basically use SQL to fetch a small part of data on which we can apply our logics and different kind of filters. To read this SQL, W3 Schools, it is the best website when it comes to the theory perspective. You can start from W3 Schools, and moving on to the practice, just go on to the HackerRank, search for SQL practice. You'll get a tab, and in difficulty level, you'll find 3 types of levels: easy, medium, and hard. Just uncheck the hard one and make sure to do around 35 to 40 questions in easy and medium. So if you start from tomorrow, in a month you will be done with Python and you will be done with SQL if you give 1 hour a day to each topic of Python and SQL. But if you understand the weightage of this thing here, most of the students those who will be appearing for analytics placement, or those who are trying to enter, some students have some certain kind of projects in their profile. Some students just show that I know Excel, I know SQL, I have done from data camp. But eventually, unless you work on project, that doesn't give you more weight. And once you have this kind of tool set in your resume, basically the weightage of the resume will be much more high, and this kind of tools will always give you an edge. Let's move to Tableau. Tableau, it is basically a data visualization tool which helps us to manage and create a few charts in a dashboard where we can represent it to managers. Whenever an analyst he wants to show some sort of business decisions or the insights which he has taken from the data, it is not quite feasible to make the whole charts with filters and allow them to select each and every filter. In that situation, Tableau helps us a lot, because once you hover over things, it is quite very user friendly, and it has a lot of AI ML based in it, which helps analysts to show and present data in a more better way. To learn this, बेसिक टैब्लो तुम्हें यूट्यूब से भी हो जाएगा, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है. अगर तुम्हें किसी चीज को दिखाना ही है कि भाई मुझे ये चीज आती है, तो ऑलवेज वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट. Clean resume. So there's a fact, whenever you go to an interview, the first instance where the interviewer sees your resume, the first glance is only of about 7.4 to 8 seconds. तो उसमें ये पता चलता है कि जब भी तुम रेज्यूमे ले जा रहे हो, या जब भी इंटरव्यूअर तुम्हारा फर्स्ट लुक देख रहा है रेज्यूमे का, वो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन है. सो योर रेज्यूमे शुड बी ऑलवेज वेरी इन अ वेरी क्लीन सिस्टमैटिक मैनर विथ ईच एंड एवरी वर्ड. The important word should be bolded, and the manner in which it is sorted, it should be clean. So we'll be focusing more on resume in the second slide. I have a very specific slide for resume. Now let's come to the soft skills. Analyst in profiles में basically एक ये चीज है कि if you don't know how to present and what actually to speak, वो उतना खास फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब ये है कि what we call the things which you are thinking, you should be in 100% manner to deliver them on a platter with 100% clarity. So I have generally seen a trend from the previous placements of different college that those students with good soft skills are generally placed quite quicker than other students. अब तुम लोग भी अच्छे कॉलेज से हो, टायर 1 के कॉलेज से हो, इंजीनियरिंग किड्स हो, तो सॉफ्ट स्किल्स जो है वो डेवलप करना पड़ता है. मतलब ऐसा नहीं कि इवेंचुअली वो डेवलप होते हैं. यू वर्क इन डिफरेंट क्लब्स, फेस्ट में काम करते हो, और जो टेक्निकल टूल्स है वो मैटर ऑफ टाइम है. 2 महीना 3 महीना तुम किसी टूल पे दे दोगे तो वो टूल आ जाएगी. और कुछ कैंडिडेट होंगे जिनको लगता होगा कि यार उतना अच्छे से नहीं, मैं बात नहीं कर पाता हूँ, या मैं दोस्तों के बीच में बात करता हूँ तो इट फील्स समवॉट एम्बैरेस्ड, या उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ. फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल,
You can just start with a basic exercise, and it is a tried, proved, and tested one. You just pick up your phone on the selfie camera, pick two random topics. It would be your favorite cricketer or favorite policy, or it could be anything. Just speak around that topic for couple of minutes. Let it be 2 or 3 minutes. Just normal camera on करो, वीडियो खींच लो अपने खुद का, वो टॉपिक पे बात करो, बंद करो. देन जस्ट लिसन टू दैट वीडियो. क्योंकि जिस तरीके से तुम लोग बोलोगे, वो तुम जब एक्चुअल में अपन खुद को देखोगे बोलते हुए, कहाँ अटक रहे हो, क्या ढंग से नहीं बता पा रहे हो, तुम कितनी क्लैरिटी में दिमाग में सोचा था और कितने क्लैरिटी में तुम डिलीवर कर पाए हो, वो जब तुम खुद को देखोगे पहले वीडियो में ही तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कितना बुरा बोल रहे हो, कितना अच्छा बोल रहे हो. एंड देन रिपीट इट अगेन. अब पहली बार बोल लिया तुम लोगों ने, खुद का वीडियो देख लिया, अब सेम टॉपिक पे वापस 2 मिनट के लिए अपना वीडियो रिकॉर्ड करो. उससे ये होगा, अब सेकंड टाइम जब देखोगे तुम लोग, तो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में काफी डिफरेंसेस फील करोगे. द रीजन बीइंग इज, at the first video you just had a topic in your mind and you had couple of points in your mind. You just try to deliver them. और कितने क्लीनली डिलीवर हुआ वो तुमने वीडियो से देख ही लिया था. अब सेकंड टाइम ये होता है, तुमने एक बार तो डिलीवर कर चुके थे, अब तुम्हें स्ट्रक्चर भी पता चलता है किस तरीके से डिलीवर करना है. तो सेकंड वाला वीडियो कंपेरेटिवली काफी बेटर होता है. इफ यू कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज, जस्ट पिक 2 टॉपिक्स अ डे. 10-10 मिनट लगेंगे, 20 मिनट का ये पूरा एक्सरसाइज होगा. ये चीज तुम 30 दिनों के लिए भी कर लोगे, तो इफ यू सी द 31st मी, 31st डे पे, इफ यू कंपेयर योर सेल्फ विद द फर्स्ट डे, यू कैन सी अ लॉट ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग एंड डिलीवरिंग. ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक तुम बोलना नहीं सीखोगे तब तक तुम प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे कि एक्चुअल में तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें क्या आता है और क्या जताना चाह रहे हो. और 1 महीना हो जाएगा, 1 महीने के बाद तुम लोग आराम से यू कैन टॉक अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, या उन टाइप की चीजें तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पे तुम्हें हल्का सा कॉन्फिडेंस की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है. तुम लोग इतना टाइम से, 1 महीने से एक बार प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाता है. नो, जस्ट कैरी ऑन दैट. लॉजिकल थिंकिंग, ज़ील टू लर्न, ये बेसिक चीज है. तुम रेज्यूमे अपना जिस तरीके से लिखते हो कि मैंने भाई इस क्लब में काम किया था, इस फेस्ट में काम किया था, ये इवेंट बन कॉलेज में अटेंड किया था या ऑर्गेनाइज करवाया था, उन चीजों से पता चलता है कि इस बंदे को कितना काम करने का अच्छा लगता है, एंड ही हैज वाइब टू लर्न न्यू थिंग्स. मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बिग डेटा. अब इस साइड जो स्पेसिफिकली डेटा साइंस वाले जो लोग हैं, वो डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के डीप में जाएंगे. एंड इफ यू आर गोइंग इनटू एन एनालिस्ट रोल, जस्ट मेक श्योर कि तुम्हारे प्रोफाइल में एटलीस्ट 1 या 2 प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग रिलेटेड हो. ये सुनने में काफी हार्ड लगता है, बट जब तक तुम करोगे नहीं तब तक वो आएगा नहीं. एंड टू डू दैट तुम्हें स्टार्ट करना होगा पाइथन से. समझ लीजिए, ये जो पाइथन का मैंने बताया था वो तुमने कर लिया, 1-1 घंटा देके आराम से तुमने 1 महीने में उसको निपटा दिया. सो वंस यू आर डन विद दैट स्किल कोर्स, just don't go backward and just revise that course. Just instead of that move to a project. क्योंकि काफी बार ऐसा होता है, मैंने भी जब पढ़ा था पाइथन, ये हुआ था मेरे साथ कि यार मैंने तो काफी फंक्शंस पढ़े थे, मुझे फंक्शंस याद नहीं आ रहे, क्या करना होगा. तो ये मोटिव यहाँ पे ये है कि तुम्हें आके उसको रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि ना ही तुम्हें इंटरव्यूअर पूछेगा, ना ही तुम्हें वो चीज कहीं एग्जैक्टली काम आएगी. पर जब तुम एक बार कर लेते हो वो कोर्स, तो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में पता चलता है कि हाँ भाई, कुछ लाइब्रेरीज होते हैं, कुछ टाइप के फंक्शंस होते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है उन चीजों को. और जब तुम प्रोजेक्ट में उन चीजों को अप्लाई करोगे, तब उस पर तुम्हारा हैंड ग्रिप जो होगा और स्ट्रांग होगा. अब प्रोजेक्ट किस तरीके से करना है. सो मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट, जस्ट स्टार्ट, जस्ट गो और गूगल मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स एनालिटिक्स विद नॉर्मल, सर्च करना. ये जो फर्स्ट ब्लॉग मिलेगा आप लोग को, 24 अल्टीमेट डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स. इसमें 3 टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं. द फर्स्ट वन इज बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट एंड एडवांस. अगर तुम थर्ड ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, तो थर्ड ईयर वालों के लिए ज्यादा इंटेंडेड सेशन है ये. और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले भी तुम लोग नॉर्मली एक्सप्लोर करना, तो तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो. तो बिगिनर लेवल के टॉप 5-6 प्रोजेक्ट्स में से कोई भी एक प्रोजेक्ट उठा लो. लेट्स से कि बिग मार्ट सेल्स उठा रहा हूं मैं. नॉर्मल कॉपी गूगल पे पेस्ट मार देना और इसके वीडियोस में चले जाना.
अभी यहाँ पे देखना, एक वीडियो दिख रहा है आपको 50 मिनट का, एक वीडियो दिख रहा होगा 2 घंटे 30 मिनट का, एक वीडियो दिख रहा होगा 1 घंटा 17 मिनट का। सो तुम्हें यूट्यूब पे काफी कंटेंट मिल जाएगा जहाँ पे एकदम स्टेप जीरो से तुम्हें हर टाइप का प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया गया है कि डेटा कहाँ से डाउनलोड करना है, डेटा कहाँ इंपोर्ट करना है। जुपिटर नोटबुक में अगर तुम कोड लिख रहे हो तो वो कहाँ से डाउनलोड करना है, कोड को किस तरीके से लिखना है, कौन सा फंक्शन किस तरीके से काम करता है, ये वीडियो से तुम्हारा काम बन जाएगा। बट इधर तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें पाइथन निपटाना पड़ेगा, उसके बाद तुम इवेंचुअली यू कैन मूव टू अ प्रोजेक्ट। अब ये नहीं है कि तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, बहुत हार्ड नहीं होगा है। तुम 2 या 3 हफ्ते दोगे किसी एक प्रोजेक्ट पे तो फिर काफी अच्छे से हो जाएगा, और 2 मंथ डाउन द लाइन तक तुम्हारे इसमें रेज्यूमे में पाइथन आ गया, एसक्यूएल भी आ चुका है, और एक अच्छा प्रोजेक्ट भी आ चुका है। तुम इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास बोलने के लिए कंटेंट रहेगा कि या आई हैव एन इंटरेस्ट इन डेटा साइंस डोमेन और डेटा एनालिटिक्स डोमेन, टू इवेंचुअली परस्यू दोस इंटरेस्ट आई हैव जस्ट वर्कड ऑन फ्यू डेटा सेट्स ऑन फ्यू प्रोजेक्ट्स। ये इस तरीके की चीज तुम रेज्यूमे में लिखोगे तो आगे वाला पूछेगा भी, तुमसे बात भी करेगा कि भाई क्या है, इसको एक्सप्लेन करो। सो दैट्स वेयर बेसिकली इट हेल्प्स यू गाइस। और दो दो 2 मंथ्स का टाइम लगेगा तुमको यहाँ तक पहुंचने में, और आराम से हो जाएगा। और कंसिडरिंग द टाइम इट इज मिड फेब, और तुम्हारा समर होगा जून जुलाई में, तो अभी तक तो आराम से टाइम है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द पीओआर क्लब एक्टिविटीज। ये जब भी तुम्हें मौके मिलते हैं, ऑलवेज ग्रैब दोस अपॉर्चुनिटीज एंड वर्क इन डिफरेंट क्लब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इन टीम्स। मतलब इन चीजों से लर्निंग काफी वाइड होती है, मतलब और तुम्हारे पास काफी कंटेंट आ जाता है रियल लाइफ एग्जांपल्स को कनेक्ट करके बताने के लिए। एंड बेसिक कोडिंग दैट इज इक्विवेलेंट टू द पाइथन विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। नाउ लेट्स मूव टू द रेज्यूमे। अब कोई भी रेज्यूमे देखोगे आप लोग, भले इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो या प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो देयर इज अ स्टैंडर्ड जो तुम्हें मीट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक्स डोमेन। तो एक एक रेज्यूमे को तुम लोग इन 7 पार्ट्स में, 7 8 पार्ट्स में आराम से सेगमेंट कर सकते हो, एकेडमिक स्किल्स, इंटर्नशिप्स। अब लेट्स डिस्कस इन डिटेल्ड मैनर कि मैं जिस चीज पे तुम्हें फोकस कर रहा था कि भाई क्लीन रेज्यूमे किस तरीके से बनाना है, हाउ टू प्रेजेंट दैट रेज्यूमे इंटरव्यूअर के सामने, ये चीज है अभी स्लाइड में बात करेंगे। तो बेसिकली रेज्यूमे रेज्यूमे से तुम खुद अपना इंटरव्यू कंट्रोल कर सकते हो। तो तुम्हें इस तरीके से चीजें लिखनी है जहां तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस है, जो तुम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, हर चीज का एग्जाम्पल दे पाओगे, और तुम्हें विद टाइम इंटरव्यू में ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ते जाए। तो किस तरीके से लिखना है, क्या लिखना है, सो लेट्स स्टार्ट विथ ईच एंड एवरी कॉलम। फर्स्ट वन, एकेडमिक प्रोफाइल। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारा सीजीपीए और तुम्हारा डिपार्टमेंट। उसको छोड़ के तुमने कहाँ से 10th किया था, 12th किया था, वो सब कुछ काम नहीं आने वाला है तुम लोग को। सो जस्ट मेक श्योर कि वो दो चीजें लिख लेना, और उसको इतना बड़ा स्पेस मत देना। मैंने कुछ रेज्यूमे देखे हैं भाई, पूरे रेज्यूमे का 40% 30% स्पेस बस एकेडमिक प्रोफाइल के लिए दे रखे होते हैं, तो उतना कुछ सेंस नहीं बनता उन चीजों का। और ये रेज्यूमे देखिए कि इसमें नॉर्मल टेक्स्ट है, बस कुछ बोल्डिंग्स है और थोड़ा क्लीन वे में रखा हुआ है। इसमें ना ही हमने कुछ कलर्स यूज किया है, ना ही कोई एनिमेशन यूज किया है। सो दैट्स द स्किल which you should develop and which you can develop. अब skills portion पे आते हैं। So in this, I'd basically focus more on two segments. The first one is the languages and technologies, and the second one is area of interest. Languages of technologies ये वो चीज है, अभी समझ लीजिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने जितने भी टूल्स आज तक यूज किए मैं सब लिख दूंगा। मैंने पाइथन यूज किया है, मैंने एक्सेल यूज किया है, मैं लिख लूंगा। मैंने कई एसक्यूएल का लैंग्वेज सीखा था, वो लिख लूंगा। मतलब जितने भी तरीके का, मैं समझ लीजिए मैं मैकेनिकल का हूँ, मैं ऑटो कैड लिख दिया। मैं केमिकल का हूँ, कोई सॉफ्टवेयर लिख दिया, किसने लैटेक्स लिख दिया। जरूरी नहीं होता कि तुम एनालिस्ट के लिए जा रहे हो, डेटा साइंस के लिए जा रहे हो तो तुम्हें पाइथन ही लिखना है और उनसे रिलेटेड ही चीजें लिखनी है। तुम अलग अलग टाइप के स्किल्स लिखोगे तो इट बेसिक इवेंचुअली शोज द इंटरव्यूअर दैट कि ही इज ओपन टू लर्न न्यू डिफरेंट न्यू टूल्स। इवेंचुअली जब एक कंपनी में आएगा या इसको नया काम दिया जाएगा या टूल्स कोई अपडेट हो जाएंगे तो उसको इतनी ज्यादा दिक्कत जाएगी नहीं। सो वो चीज काफी स्ट्रॉन्ग सिनेरियो क्रिएट करता है। और जितने ज्यादा टूल्स लिखोगे
मतलब ऐसे लिखना है कि जिनको तुम डिफेंड कर पाओ, ये नहीं कि 20-25 टूल्स उठा के लिख दिए। ये लिखना, ऐसे ही लिखना जो तुम डिफेंड कर पाओगे। सेकंड वन, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये बेसिकली वो लाइन है, जब इंटरव्यूअर इस लाइन से तुम्हारे चले जाता है तो उसके एक माइंड में बायसनेस आ जाता है कि द डायरेक्शन एट विच दिस दिस इंटरव्यू शुड गो। अब ये रेज्यूमे नलानी हर्ष वेंकटा का है। अब इसने क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट में डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। अब उसको पता है कि दिस रेज्यूमे इज समवॉट मोर टेक savvy एंड ही हैज मोर इंटरेस्ट इन डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग। सो एक बिना बोले अगले क्वेश्चन से अगला जो प्रेशर होगा वो मशीन लर्निंग के साइड होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट, दोनों के लिए सेम है। अभी काफी लोग के पास इंटर्नशिप नहीं होगी तो ये कॉलम नहीं रहेगा, पर अब जब प्लेसमेंट में बैठोगे उस टाइम तक एक इंटर्नशिप तो जरूर करके जाना। और आजकल बाहर तो काफी इंटर्नशिप मिलते हैं, किस तरीके से लगवाना है वो आगे वाले स्लाइड्स पे आएंगे। और सबसे नेसेसरी स्किल्स क्या सीखना है वो मैंने बता दिए। स्किल्स सीख के अब जो प्रोजेक्ट करोगे उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो ये स्लाइड है। अब इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट, तुम जब भी कोई काम करते हो तो उनको बेसिकली चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जिसमें हम प्रेजेंट करते हैं। मैंने काफी जगह देखा है कि लोग एक पैरा लिख देते हैं कि आई हैव वर्कड विद सम कंपनी, और मैंने इतने 4 लोगों को संभाला था और इस प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया था। ऐसा रैंडमली तुमने लिख दिया एक पैसेज टाइप का, उससे कुछ उतना सेंस नहीं बनता यार, क्योंकि जब भी वो पैसेज अगर किसी को दिख गया ना इंटरव्यूअर को, उतना पढ़ते हुए बैठेगा नहीं। तो उसको पॉइंटर्स में बनाओ सबसे पहली बात तो। अब पॉइंटर्स में तुम्हें किस चीजों पे फोकस करना है? एक स्वीट सिंपल लाइन, तुम्हारा डेजिग्नेशन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटर्न और कंपनी। डेजिग्नेशन और कंपनी, चलो ठीक है, अब पता चल गया भाई ने कि भाई प्रोडक्ट में काम किया था या मशीन लर्निंग पे काम किया था। नाउ नेक्स्ट लाइन, इट शुड बी अ वन लाइनर एक्सप्लेनेशन ऑफ योर 2 months या 1 month प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप, कि तुमने बेसिकली 1 महीने में क्या किया था। और बेसिक इंग्लिश लिख के, उसमें ना कोई टेक्निकल वर्ड्स यूज करके या ना कोई हार्ड वर्ड्स यूज करके इंग्लिश के। नॉर्मल कि आई हैव वर्कड विथ इन्वेस्टमेंट फर्म and worked on so and so company's 2 years stock market data and eventually applied a model on its data। तो इतना ही लिख दिया जिससे इमेज आ गई और उसको पता चल गया कि इसने 2 महीने में या इंटर्नशिप में या प्रोजेक्ट में क्या किया था। इवेंचुअली अब उस पॉइंट के बाद जब तो हमें सेकंड पॉइंट पे मूव होना है, वहां पे तुम्हें लिखना है टेक्निकल टर्म्स। अब तुम्हें थोड़ा डीप में जाओ। अब रेज्यूमे हमें क्या होता है, रेज्यूमे इज जस्ट टू प्रोवाइड अ बेस फॉर अ टॉपिक टू टॉक अपॉन। ये नहीं होता है कि तुम पूरा उसमें स्टोरी उसमें लिख दो, उसमें बस पॉइंट लिख के छोड़ना है। और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी होने चाहिए वो पॉइंट्स, और इवेंचुअली तुम उसको एक्सप्लेन भी करने के पोजीशन में रहने चाहिए। अब सेकंड सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो मैंने बता दिया कि एक ब्रीफ ऑब्जर्व, मतलब ब्रीफ जो तुम्हारा काम किया है बेसिक लैंग्वेज में। सेकंड पॉइंट, गेट इनटू टेक्निकल स्टफ, कि ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट तुमने किन चीजों पे काम किया है, तुमने कौन सा मॉडल लगाया। अगर तुमने मशीन लर्निंग का मॉडल लगाया तो रैंडम फॉरेस्ट लगाया, डिसीजन ट्री लगाया, क्या लगाया, डीप लर्निंग लगाई थी, न्यूरल नेटवर्क लगाया, क्या लगाया। तो इन्होंने क्या फ्रेमवर्क्स यूज किए थे, स्वॉट, लो फाइव फ्रेमवर्क्स, मतलब हब स्पॉट, मतलब टैम सैम, इसने जितने टूल्स यूज किए थे टेक्निकल टर्म्स, उन सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट्स में उसने टेक्निकल टर्म्स लिखे हैं। तो वहां पे एक बेस सेट हो चुका है। इसकी डेजिग्नेशन पता चल गई थी, कहाँ इंटर्नशिप किया है, किस चीज में प्रोजेक्ट किया है इसने। ना उसको एक लाइन पढ़ के वो भी पता चल गया था क्या काम किया है। अब वो मूव ऑन करेगा तुम्हें तुम्हारा नॉलेज टेस्ट करने पे, वो उसके अंदर जाएगा। अब वो चीजें बात बात होगी जिस तरीके से। अब थर्ड पॉइंट ये होना चाहिए कि तुमने काम किया, तुमने टेक्निकल चीजें सीखी, बहुत बढ़िया। अब अपार्ट फ्रॉम दोस टेक्निकल स्किल्स, व्हाट हैव यू लर्न ड्यूरिंग दोस प्रोजेक्ट और दोस इंटर्नशिप। इट कुड बी टीम मैनेजमेंट, इट कुड बी टाइम मैनेजमेंट, क्या किस तरीके से कस्टमर से बात करना है, या सेल्स के बारे में तुमने सीखा, ये पर्सपेक्टिव लिखो जिससे लगे कि स्टूडेंट्स आर, मतलब उस बंदे का दिमाग एकदम वाइड ओपन था एंड ही लाइक्स लर्निंग न्यू थिंग्स, और चारों तरफ देखते रहता, उस टाइप वाली फील आनी चाहिए। एंड द फोर्थ पॉइंट, फाइनल पॉइंट, शुड बी द इम्पैक्ट। तुम कोई भी काम कर रहे हो, तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो या इंटर्नशिप कर रहे हो, उस चीज का इम्पैक्ट होगा। तुम इंटर्नशिप कर रहे हो किसी फर्म के अंडर या किसी स्टार्टअप के अंदर, तो उस काम करवाने के लिए किसी एक
डायरेक्शन में प्रोजेक्ट चल रहा होगा, उसको मीट करने के लिए, कोई टारगेट मीट करने के लिए तुम्हें लाया गया है। तो उसका इम्पैक्ट लिखो कि तुमने सेल्स बढ़ाया 10% या रेवेन्यू बढ़ाया 5%, तुमने फुटफॉल बढ़ाया वेबसाइट पे इन टर्म्स ऑफ फिगर। तुम एनालिस्ट हो या डेटा के अराउंड तुम अप्लाई कर रहे हो, तो तुम्हारा जो रेज्यूमे है वो देख के पता लग जाना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा एनालिस्ट वाला है। तो एक वाइब्स आने के लिए तुम्हें डेटा में बात करनी है और डेटा रिलेटेड पॉइंट्स डालना है और डेटा से ही तुम्हें गॉच करना है चीजों को। तो कितने परसेंट्स में बात करो, CAGR में बात करो, इन तरीके की चीजें जो इम्पैक्ट डालती है। तो ये बेसिकली ये वे ऑफ राइटिंग है, जिससे एक स्ट्रक्चर है जिससे तुम प्रेजेंट करते हो, काफी क्लीन लगता है और आगे वाले को काफी इंप्रेसिव लगता है। अब जब इम्पैक्ट लिखते हो उससे पता चलता है कि हाँ इसने काफी अच्छे से काम किया है। अब बोल्डिंग सब देख रहे होगे तो कुछ रैंडम वर्ड्स तुम्हें बोल्डेड दिख रहे होंगे इस रेज्यूमे में। सो द रीजन बिहाइंड दोस बोल्डिंग इज that he is poking the interviewer to ask those words. So, for example, he has bolded lo-fi frameworks. So, SendGrid frameworks. Instead of, so if I would be the interviewer, if I am reading this third line and it's my chance to ask a question, instead of asking redesigning about the website, I'll straight away go to what is lo-fi frameworks. So, he basically wants the interviewer to ask those things, और वो बंदा काफी अच्छे से प्रिपेयर करके गया है इन चीजों को। तो यहाँ पे रेज्यूमे हमें हेल्प कर रहा है इंटरव्यू का डायरेक्शन सेट करने में। सो दिस इज द वे इन विच वी राइट अवर इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स। तुमने जो भी कोर्सेज किए होंगे या अभी जो करोगे उनको एक स्ट्रेट सिंपल लाइन में लिखो, क्योंकि अगर मैंने मशीन लर्निंग लगाया है कहीं पे तो मुझे पाइथन आनी चाहिए, तो उस पे सवाल नहीं जाएगा। पर काफी जगह ये देखा है कि बस स्किल्स को इतना अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है कि वो ही बहुत चीज है कि मेरे को बस उतना ही आता है। बट ये ध्यान में रखो, अनलेस यू वर्क ऑन समथिंग दैट डजंट जस्टिफाई। When it comes to the portion of responsibilities, honors and achievements, extra curricular activities, यहाँ पे जितने पास तुम्हारे पास चीजें होगी वो सारे लिखो। कि अगर तुम दो बंदे एक साथ इंटरव्यू में जा रहे हो, मतलब फाइनल राउंड है और 3-4 लोग हैं, और तुमने भी स्किल्स गेन कर लिए, तुमने प्रोजेक्ट कर लिए है और किसी और ने भी कर लिया, सो उस समय पे ये POR टाइप की चीजें, ऑनर्स एंड अचीवमेंट्स, एक्चुअली क्रिएट्स एन इम्पैक्ट एंड गिव्स यू एज। क्योंकि जब तुम फेस्ट में काम करते हो, टीम्स में काम करते हो, अलग अलग जगह काम करते हो, दैट टीचर्स यू समथिंग, अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो तुम्हें मैनेजमेंट चीजें सिखाता है, किस तरीके से बात करना होती है लोगों से, वो चीजें सिखाता है। और इन पॉइंटर्स को ढंग से लिखो कि आई हैव रेज्ड अ स्पॉन्सरशिप अबाउट 2.7 lakhs in terms of figure which gives weight to your resume and which gives weight to your points. अब अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हें इस तरीके का, समझिए सेकंड ईयर में थे तुम लोग और तुमने किसी फेस्ट में काम करने के लिए बस पोस्टर चिपकाए तुमने हॉस्टल घूम घूम के, उसको इस तरीके से मत लिखो कि मैंने पोस्टर चिपका दिया। उसको इस तरीके से लिखो, आई हैव वर्कड विथ कपल ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, मतलब फर्स्ट ईयर के बच्चे, of so in so club, and helped to grow reach of that club or that event in college by applying my own thoughts and ideas। तो वो भी कुछ ना कुछ होगा ना, तुमने बोला होगा यार वॉशरूम में लगाते हैं, बॉयज वॉशरूम में पोस्टर्स लगाते हैं, वहां पे जाके दिख ही जाएगा, नोटिस बोर्ड तो आजकल दिखते नहीं है। तो इस टाइप से हट के आइडियाज तो वहां पे प्रेजेंट करने हैं तुम्हें, पर लिखना उनको काफी फॉर्मल और ब्यूटीफुल वे में। Same goes for honors and achievements, extracurricular activities. Okay. So let's move to the next slide. Importance क्या है? इतना मैंने इंटर्नशिप बोला है, क्या पढ़ना है, किस टाइप की चीजें पढ़ना है वो मैंने बता दिया, किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो बता दिया। अब इम्पोर्टेंस ये होता है, whenever you get an internship, it basically gives a weightage to your resume. Once you have internship, you get a confidence to speak in an interview when it comes to the placement or when it comes to the job profile whenever you go off campus and apply, or if you apply in campus. It gives a exposure to you of the corporate world, how things work and what are the tools which are extensively used. If you work great, you get a chance of PPO, which is pre-placement offer. uh, each and every internship, the motive should be to learn new skills। प्रोफेशनल नेटवर्क तुम्हारा बनता है और कॉन्फिडेंस आता है, नॉलेज तो मिलती है तुम्हें इंडस्ट्री की। ओके, बिफोर गेटिंग टू द वेज टू गेट ए इंटर्नशिप, द बेसिक थिंग, काफी लोग को मैंने देखा है कि यार थर्ड ईयर में आ गए, फोर्थ ईयर में
स्टार्ट में अपनी प्लेसमेंट्स होंगे, वहाँ पे हम जॉब वॉब लगाएंगे और अपने क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट का एवरेज 6 लाख है, 5 लाख है, इतने परसेंट लगते हैं, 8 लाख है, जो भी है। अब उस चक्कर में क्या करते हैं लोग, इंटर्नशिप पे उतना फोकस नहीं करते हैं। अब कुछ लोग करते हैं तो फिर बोलते हैं यार 5,000 की इंटर्नशिप है, 10,000 की है, यार इंटर्नशिप फ्री वाले ही मिल रहे हैं, कोई पेड इंटर्नशिप पैसे वाले नहीं मिल रहे। तो ये पॉइंट है कि इवन आई वाज अ केमिकल इंजीनियर व्हेन आई स्टार्टेड, बट बीइंग अ फ्रेशर आई स्टार्टेड विद 16 एलपीए। केमिकल से उधर गया, पर मैं जब इंटरव्यू में मैं जब बात कर रहा था, मैंने 5,000 के इंटर्न, 10-15 हजार के इंटर्न्स के बारे में भी बात किया। तो वही एक बेस था जिससे मेरी जॉब लगी। अब ये किस तरीके से ढूंढना है वो मैं बताऊंगा, बट तुम्हारा मेन प्राइमरी मोटिव होना चाहिए कि तुम क्या सीखने वाले हो उस इंटर्नशिप में। ये नहीं कि तुम्हें कितना पैसा मिल रहा है। अब स्टार्टअप्स में काम करोगे, भले काफी अनपेड रोल्स होंगे कुछ, तो ये देखो तुम किसके अंडर काम कर रहे हो, ये नहीं कि तुम्हें कितना मिल रहा है। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द वेज टू गेट एन इंटर्नशिप। सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट मतलब स्लाइटेस्ट वे ये होगा कि जो ऑन कैंपस इंटर्नशिप के लिए कंपनी आ रही है, या एलम्स तुम्हारे जहाँ पे प्लेस्ड है, जो प्लेसमेंट्स के लिए इंटर्नशिप्स में कंपनीज आती है, उन कंपनीज को ट्रैक करो, तुम्हारे सीनियर्स को ट्रैक करो, एलम्स को ट्रैक करो कि भाई वो किन कंपनीज में प्लेस्ड है। उनको एक शॉर्ट मैसेज लिखो कि आई एम साजन एंड आई एम फ्रॉम थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर ऑफ दिस कॉलेज, एंड I am exploring this analytics field. I have some kind of projects and I'd like to work under you. और वहां पे रेज्यूमे का लिंक डाल दो। रेज्यूमे बेसिकली अपना ड्राइव में डाल देना, जस्ट शेयर अ लिंक एंड इवेंचुअली वहां पे ऐड कर दिया करो। एक चीज है कि कॉर्पोरेट मार्केट में जब तुम लोग रेज्यूमे देते हो अपना, तो अटैच मत करो। अटैच इन द सेंस कि काफी टाइम लोगों को टाइम नहीं होता है कि तुम्हारा रेज्यूमे डाउनलोड करे और फिर पढ़े। हमेशा लिंक दे दिया करो, जिससे बस खोल लिया, देख लिया, फिर छोड़ दिया। वो काफी फिजिबल और बेटर वे में तुम ट्रैक कर सकते हो। सेकंड में लिंक्डइन। लिंक्डइन में जो इंटर्नशिप्स आते हैं वो 1% से लो कन्वर्जन है, उससे उतना फायदा नहीं पड़ेगा, बट इंटर्न लिंक्डइन विल बी मच मोर हेल्पफुल इन मेकिंग कनेक्शंस एंड आस्किंग अबाउट द कॉन्टैक्ट्स एंड ईमेल आईडीज। अब तुम्हें पता है इस कंपनी में कौन सा सीनियर काम करता है, उसका तुम्हें लिंक्डइन पे ढूंढ लिया और लिंक्डइन पे तुमने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी, और फिर भैया ने एक्सेप्ट किया, जो भी किया, वहां पे तुम बात कर सकते हो। बायो एनालिटिक्स स्कूल, हमारे पास भी प्रोग्राम्स है, हम लोग भी इंटर्नशिप्स में हेल्प करते हैं, और जो बेसिकली प्लेसमेंट्स में हेल्प करते हैं। रिसर्च इंटर्नशिप्स, कुछ लोग होंगे जिनको प्रोफ्स के अंडर काम करने के लिए, प्रोजेक्ट करने का जो भी मन होगा, तो यू कैन बेसिकली टारगेट आईआईटीज, आईआईएम्स एंड एमबीए कॉलेजेस, डिफरेंट colleges, and you can just go on to their website, search for the professors column. You will get a name, email id and the area of expertise of that particular what we called a professor. Then just write a cold mail, वहां पे तुम्हें उनकी email id भी मिल जाएगी। email id डाल देना और लिख देना, या हेलो सर, आई एम साजन, अपना शॉर्ट इंट्रो, एंड I am moving towards analytics field. To explore this field, I have learned SQL, Python, and I've worked on this project. And I want to explore this field and get more experience in it. So I came across your profile and I saw your interest in these domains, and even these domains intrigue me. So I would like to work under you. इस तरीके से रिक्वेस्ट करो। और जब कोल्ड मेल आता है किसी प्रोफेसर को, काफी तुम्हें मतलब एटलीस्ट तो रिप्लाई देगा। तुम 20-25 प्रोफेसर को करो, एक तो देगा तुम्हें। नेक्स्ट, स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स के जो वेबसाइट्स होते हैं, angel.co, इंटर्नशाला, D2C विच इज डेयर टू कम्पीट, इन पे प्रोफाइल्स बना लेना, अपने रेज्यूमेस डाल देना, और एटलीस्ट 10 मार्च से अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। मैंने भी मेरी इंटर्नशिप पहली लगाने के पहले एटलीस्ट मुझे 50 से 70 जगह मुझे अप्लाई करना पड़ गया था पहली इंटरव्यू लगाने के लिए। पहला इंटरव्यू तो बेसिकली मेरा कट गया था, क्योंकि मेरे को एक्सेल नहीं आता था। उन्होंने पूछा पिवोट टेबल आता है क्या, मैंने बोला नो सर। तो उसने मेरे को बाकी मशीन लर्निंग पूछा भी नहीं। मैंने एक्सेल छोड़ के मैंने पहले मशीन लर्निंग कर ली थी, पर सबसे पहला सवाल उसका था पिवोट टेबल आता है क्या। मैंने इवेंचुअली नहीं बता पाया था मैं। पर ये जो स्टार्टअप्स है, तुम्हें
इनकी हायरिंग तुम्हारे मिड मार्च से शुरू हो जाएगी। और ऐसा नहीं होगा कि आज मैं अप्लाई करूंगा मुझे कल इंटरव्यू का मौका मिल जाएगा। तुम 10 मार्च से अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, तब जाके तुम्हें 15, 20, 25 मार्च के आसपास तुम्हें इंटरव्यू का मौका मिलेगा। और तुम्हारे पास आधा मार्च होगा, पूरा मार्च अप्रैल पूरा होगा, और मई के मिड में तुम्हारा कॉलेज खत्म होगा, जिसके बाद समर ब्रेक्स होंगे। तो तुम्हारे पास लगभग वहां से 2 महीना टाइम है कि तुम हर रोज 15, 20, 30 जगह अप्लाई कर रहे हो, और 1.5 2 हफ्ते बस एक ना एक तो इंटरव्यू शेड्यूल होगा। तुम्हें एटलीस्ट इंटरव्यू तो दे के देखो, तुम्हें पता चलेगा कि भाई मैं बात कर पा रहा हूँ, नहीं बात कर पा रहा हूँ, मेरा रेज्यूमे रेडी है या नहीं है, जो भी चीज है। नेक्स्ट एलम्स, अभी जो मैंने बताया था वो बेस्ट होता है। तो जाओ नॉर्मल ही सर्च करो स्टार्टअप्स जो भी अपकमिंग है, जैसे ओयो हो गया, उबर हो गया, नेसेंट स्टार्टअप्स। इनके नॉर्मली लिंक्डइन पे जाना, पेजेस पे अबाउट अस देयर इज अ टैब कॉल्ड पीपल और एम्प्लॉयज। वहां पे जाओगे तो तुम्हें पहले फाउंडर्स मिलेंगे, उसके नीचे मैनेजर्स मिलेंगे। मैनेजर्स को मैसेज करो कि ये है, आई वांट टू वर्क अंडर यू, कोई प्रोजेक्ट हो आपके अंडर तो आप बता दीजिए। और पेमेंट पे फोकस मत रखना, उनका ऐसा होगा कि हाँ यार उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, तुम्हें मौका दे देंगे, वरना नहीं देंगे। और सेम कंपनी के 20 मैनेजर को करो, कोई दिक्कत नहीं है। इनके पास उतना टाइम नहीं होगा कि भाई मेरे पास कौशिक का मेल आया तो वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ये नहीं होगा। 20 में से एक आध तो कन्वर्ट करेगा। इवन इसका मतलब इन शॉर्ट बता दो कि इंटर्नशिप तुम्हारे पास चल के नहीं आएगी, तुम्हें अप्लाई करते रहना पड़ेगा। और स्टार्टिंग के 1 2 3 भी कट सकते हैं, तो तुम्हें अप्लाई करते रहना पड़ेगा जब तक तुम्हारे पास ऑफर लेटर बन के नहीं आ जाता। सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ द स्किल्स, वेयर फ्रॉम वेयर टू रीड, और कहाँ पे अप्लाई करना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, और किस टाइमलाइन के हिसाब से कहाँ कहाँ कैसे जाना है। तो इसके रिकॉर्डिंग हम लोग तुम्हें भेज भी देंगे, तो अभी शॉर्ट नोट्स इन चीजों को बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। And the second session, it will be taken by Shubham Aryan, and it will revolve around the course which we provide। उसमें काफी अच्छी टाइमलाइन होगी। तो ये स्पेसिफिकली थर्ड ईयर के लिए है, जो प्लेसमेंट्स के लिए बैठेंगे या एनालिटिक्स के में जाएंगे। सो जस्ट मेक नोट ऑफ द टाइमलाइन विच ही विल बी शोइंग, तो तुम्हें एक रफ एसेंस मिल जाएगा कि किस तरीके से मुझे प्रिपेयर करना है प्लेसमेंट्स के लिए। हाय आर्यन। Hi, Sajan. या वी कैन। Yeah, yeah. Okay. Thanks a lot, Sajan. And thanks a lot, NIT Hamirpur, for giving us this opportunity to showcase about our program. As Sajan mentioned, this will be highly beneficial for people who will be appearing for placement, third year BTech program, fourth year dual degree programs, or other people who are in second year of their master's program, first year of their master's program. It will be really helpful for you guys. Other people can also stay in the call and know more about how to get placed in an analytics form. And also, to rebrief what Sajan mentioned, getting an internship is not a very big deal in current work from home setup, especially. So there are basically 4 steps. You have to build your profile. So build your profile means upskill your tech knowledge and your non-tech understanding. Then you have to apply a lot. You have to apply a lot on every possible platform: LinkedIn, D2C, Angel.co, or by messaging to your seniors. Then you have to take lots of interview. You have to solve assignments, take lots of interview, and the final step will be you will get an internship. This whole process won't take more than 2 months. Just be cool, calm, and confident, and you will be able to land an internship. Now let us move on to the flagship program that my analytics school offers for the placement. So these are basically 9 major offerings that we have for the students of NIT Hamirpur and all other tier 1 colleges around India. So this year we are visiting all the IITs, all the NITs, and top tier colleges from DU as well, and various triple IITs and colleges like NSIT, DTU. Sajan, we can move on to our website and look at all our opportunities. Look at all our offerings. Yeah. So let us start with the first offering, which is internship opportunity. So once a student register with my analytics school, we will help the candidate to get an internship off campus through the various websites which Sajan mentioned, and also we will provide you an interview opportunity.
to take an interview with us, and based on your interview, we will provide you an internship in the role of data analyst or business analyst or product analyst. Uh, so again, it will be quite helpful if you get an internship offline. Okay, the next part is one-to-one mentorship. So we all have been in this placement journey, and we have, in every part of our life, we feel there is a mentor or a senior or a bhaiya who is always there to help us. So ऐसा होता है कि if there is a mentor behind you, you feel quite confident. You can go to that person, कुछ भी doubt पूछना उसके लिए. So in this program, each one of you who will join this program will get a mentor, and ये mentor वो लोग होंगे जो जिन्होंने खुद एनालिटिक्स में जॉब लगवाया है, जो टियर 1 कॉलेज से पढ़ चुके हैं, आईआईटीज और एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज से, एंड दे आर करेंटली वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट और सीनियर डेटा एनालिस्ट और प्रोडक्ट मैनेजर एट वेरियस एनालिटिक्स फर्म. सो दीज मेंटर विल बी विद यू थ्रू आउट योर प्लेसमेंट सीजन. तो तुम्हारा टाइमलाइन कुछ ऐसा दिखेगा प्लेसमेंट का. इन मार्च यू विल ज्वाइन अस. 1 मार्च से हमारा कोर्स स्टार्ट होगा. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई वी विल हेल्प यू इन अपस्किलिंग, एंड अगस्त में तुम्हारे प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं, एंड योर मेंटर विल बी विद यू from the beginning of April only. So your mentor will be with you from April till you get placed. The next part is mock test and performance tracking. So mock tests are the first and very essential part of any placement process. किसी भी process में ये सबसे पहला elimination round होता है. So they eliminate candidates. 200, 250, 300 candidate appear होते हैं, and they select 50 to 70 candidates. So what we help, we provide you chapter wise test. सबसे पहले not only tests. At first we will provide you study material for quant, LRDI and verbal, for chapters like PNC, probability, time and work, जो भी placement test में आते हैं. उसके बाद we will provide you tests around these chapters. Then we will be having combined test, जो कि एक तरह से mock tests होंगे actual placement test के. And then there will be company wise test, which is basically the कंपनी टेस्ट विच हैपेंड लास्ट ईयर. एक तरह से मान सकते हो कि लेट से जेडएस आती है अपने यहाँ, फ्रैक्टल आती है, मास्टर कार्ड, ई एक्सेल, जो भी कंपनी आती है उन्होंने पिछले साल जो भी टेस्ट लिए थे, वेदर इट इज एनआईटी हमीरपुर या फिर एनआईटी त्रिची, कहीं पे भी लिया, वी हैव ऑल दोज क्वेश्चंस विद अस. So we compile them and we provide you that test. So before appearing in actual placement test, तुम लोगों को एक फ्लेयर मिल चुका होगा कि हाँ ऐसा टेस्ट होने वाला है, and that will give you a major bonus in placement test. Our next offering is basically, can we slide down? Yeah, certified courses and projects. This is a major gap that we are not able to find a course which did not take much time, which is well curated and everything, which consists of everything needed. So MAS provides you such a course on SQL, machine learning, MS Excel, statistics, Tableau. हर कुछ के अराउंड हमने कोर्स बना रखे हैं. We will provide you these courses, and also we will provide you certificate for these courses, so you will be able to write them in your resume as well. And as Sajan mentioned, कि courses are not enough to showcase your skill. So after those courses, we will provide you 2 projects. One will be around SQL and Tableau, and and the second project will be around machine learning. So basically, after doing these 2 projects, you can write them in your resume, and you will be doing hands-on. So you will be able to grasp the concepts and defend these concepts in the interview as well. So that is another plus while you join this program. The next part is communication skill enhancement. So the data analyst, business analyst or consultant or any type of analytics role is a kind of client facing role. So you are not only supposed to write a code, you are going to handle client, you are going to handle business. So you have to have a good communication skill, and communication skill can sometimes, so as we all know, we all are techies and we are in a technical institute and we lack a bit in communication. I too was not very good in the beginning of my first year. I was really great in what you can say maths, physics and chemistry like all of you, but communication was not my forte. But eventually in 4 years of my college, I improved my communication. So by doing the methods which Sajan earlier mentioned, so when you join this program, we will help you in enhancing your communication by providing you personal suggestions, by organizing GD, by organizing open house sessions, by organizing just a minute sessions, and in this way, your communication will improve. The next part is case study and guesstimates. So basically, when I say business analyst, you are an analyst as well, and you are helping the business to grow. So you have
some understanding of business as well. And how companies test your business understanding? By providing you guesstimates and case studies. These are the these ways they test your your non-tech skills, basically how much you understand business. So, what we provide, we will help organize sessions for case studies and guesstimates. After that, we will help you in practicing one-to-one case studies with your mentors, with the mass team, and eventually you will be in a situation where you can solve each and every case studies or guesstimate which are going to be asked in your placement interviews. Okay. Okay, yeah. The next part is resume building. Resume is the most important part in any interview process. And even in off campus, while applying for internship or while applying for job or while switching your job, resume is a thing which the HR sees for 7 or 8 seconds, and based on that he or she will decide कि आपका resume आगे जाएगा कि नहीं. There are resume tools as well which eliminate your resume if it do not consist of certain set of words like machine learning, analytics, SQL, or something like this. ऐसे words नहीं है आपके resume में, then that resume will be eliminated. So we will help you in building your resume. One-to-one session होगा हर बंदे के साथ, anyone who will join this program. The next part is mock GDs and interview. So we will again help you in preparing for the interviews. Now preparing for interview the different tasks. So let's say हम लोगों ने SQL पढ़ लिया या machine learning पढ़ लिया, but doing a project and preparing for interview is a different thing, because in an interview the questions are of different type. So this is not like Viva of college. So they will ask tell me 5 properties of machine learning, or tell me why do we use pandas. They will ask different set of questions. How you use this thing in your project? What is difference between linear and logistic regression? Why logistic regression is called regression? Or what is the difference between delete drop command in SQL? These type of questions will be asked there. People who are from first or second year या third year के भी वो लोग जिन्होंने ये चीजें अभी नहीं पढ़ी है, do not get intimidated. ये चीजें बहुत high level चीजें नहीं होती है. You just have to give some time and you will also know about these things. So we will again help you in preparing for interviews, and again these interviews will be taken by industry experts जो लोग खुद analytics industry में काम कर रहे हैं, जो लोग खुद interview लेने आते हैं. So again, you will be getting you will be getting a session from Sajan and me about preparing how to prepare for internship. उसके बाद there will be one-to-one mock interviews in the month of July only. And the third and the ninth and the most important part, which is off-campus job opportunities. So yeah, analytics industry is just in the growing phase, and training and placement cells are doing a great work in bringing a lot of companies. But still, if let's say even in top IITs, 30 to 40 analytics companies visit college. But if you look around, there are more than 200 companies which need people in analytics domain. So there's a major gap in between the skilled students and the company's requirement. So that's why where we come and we provide off-campus opportunities. So we are a platform where we will be having students from, let's say, NIT Hamirpur, and we will be having companies like Mastercard, EXL, Fractal. We will provide your resume to these companies and you will get an interview opportunity. And as you have prepared with our program for 5 months, we believe you will be able to get that job as well. So we will provide you better job opportunities as well in the analytics industry. We can move to next slide. So these are the things that we offer in our flagship program, which will span for 5 months from March till August, and it will continue till you get placed. This is a brief roadmap. So you will register with us, then you will prepare for your test. We will amplify your tech skills. Then there will be non-tech training, guesstimates and case studies सिखाएंगे. Then there will be GD interview. And once you get placed on your campus, if you are willing to get a job, let's say someone gets a job of 6, 8 or 10 LP in campus opportunities, and the person wants to get a better job. So what we will do, we will help that person to get a job off campus as well. We are not here to put a limit on your capabilities, and that's what Chirag mentioned in the beginning. Okay, next slide.
Yeah, so this is a brief of our timeline. Our course is of 25 weeks. We can look at the detailed timeline, Sergeant. Yeah, so we have divided our timeline into four major parts, which is test preparation, technical skills, non-tech, and the interview preparation. And do not worry, guys, ये timeline हम तुम लोगों के साथ share कर देंगे, detailed timeline. If anyone follows this timeline, that person will be quite ready for the actual placement. सो टेस्ट प्रेप पे हम लोग 2-2.5 महीने का टाइम स्पेंड करेंगे. देन देयर विल बी कंबाइंड टेस्ट, कंपनी टेस्ट. इसके बाद टेक्निकल पार्ट भी चल रहा होगा, सीक्वल चल रहा होगा एक टाइम पे. देन वी विल डू MS Excel and Tableau, देन पाइथन होगा. Then in the month of June, we will start case studies and guesstimates. And then in the interview preparation, scroll a bit. In the interview preparation, there will be resume building, GDs होगा, HR sessions होंगे, interview prep होगा. There's a lots of things, and few people will say कि अरे ये तो काफी सारी चीजें हैं. नहीं, if you look at the timeline, it is well balanced, and these activities will take 3 to 4 hours of your daily time. And I believe everyone should put at least 3, 4, 5 hours for 4, 5 months during their placement preparation. It will not only help you in getting a job, it will help you in enhancing your career. Whenever you join your company, you will be a better employee, you will get better raise, you will get promotion earlier. So yeah, अगले 4-5 महीने काफी crucial हैं for all those people who are going to appear in the placement. And obviously people who are in first and second year, as early you start, it will be as much better. We will share the timeline with you guys. वहाँ पे look at in a detailed manner. It is prepared meticulously, and it is prepared and it is curated for the placement with the timeline, placement timeline of NITs. Next slide. And meanwhile, anyone having any doubt, you can ping on the chat. Chirag will be happy to help. So let us look at our mentors. Who are these people? So our mentors are the people who have been in the same journey, analytics, who have been engineering students from various branches like chemical, mechanical, mining. But in engineering branches, में उन्हें मजा नहीं आया, and they tried exploring analytics. So these are the same people who were in same boat जिसमें आज तुम लोग हो. So these people have experience in analytics. They are currently working in analytics companies, and they have been through the same journey, so they know how to prepare for analytics, and these people will be with you throughout. So that will be a major plus. So here we have our mentors. We have Shruti, Harsha, Yash a lot of people are from tier 1 colleges like IIT BHU, IIT Kanpur, IIT Roorkee as well. So you can go and check our website and look at their profile. These people will be helping you in getting a job next year. Next slide, please. Okay, one of my favorite slide, which is our testimonial. So this is our placement of our last batch, which started last year. So in that batch, we had 56 students, 55 appeared for placement, and in 55, we got 54 placed. And another person who is not yet placed is trying off campus, and we believe by March or April, he will get placed as well. So that puts us at 98% student placed as of now. Okay, one more thing. Do you guys know what is average CTC for analytics in India? It's 12 LPA. And that is a number which we always look upon. That is the number above which 83% of our students got placed. So you can say कि 54 में से 45-46 लोग की जॉब 12 LPA से ऊपर लगी थी. And that is a very important number, because we know that everyone who are in IITs or NITs, basically tier 1 engineering college, deserve this kind of job if they have prepared that much. So that is the difference. Someone says कि अरे मैंने 1 महीने पढ़ के job लगा लिया. That won't help in longer run. If you put 5 months of your life and put it vigorously in upskilling yourself, that will help you a lot. Not today, but in future as well, in longer run as well. So, and if you are getting a job of above 12 LPA, so you won't start as a junior analyst or
just an analyst. You can start as senior data analyst, or you can start as a uh, senior data scientist or associate data scientist kind of role. So you even not only your package will be better, your job roles will be better, and your opportunities will be better as well. So that's what we always look for. We do not limit ourselves to help a student just get a job. We are focusing on helping our students get a job which that person deserves. And as of now, our number is 12 LPA. That is what we look upon. There are few other numbers which are there, like 24 LPA job and all that. Here Sajan is sharing our placement report. This is available on our LinkedIn and Instagram as well. Go check it out there. Chirag, you can also ping the link to our LinkedIn and Telegram so that they can check our last year placement, other helpful post. And do follow our Instagram and LinkedIn. There we share a lot of cheat sheets and hiring posts which can be helpful to you. And here we have testimonials from Devanshu and Rasif, who have been our students earlier, and they have rated us 5-star as well. This is our team, these are our mentors, and these are our offerings, which we already discussed. And there are a few numbers around placement as well. So average of 15 LP and so and so. Now comes the very important slide, ISA. So अभी काफी लोग curious होंगे कि so my Analytics School is offering a lot of things, mentorship program which comes with a cost, test है, GD है, and so lots of things which obviously includes a cost. So they must be charging a lot. So let me tell you all, we are not charging anything. So let me tell it in a better way. We are not charging you anything till your job starts. So let us give a time. और इसको थोड़ा समझते हैं. So right now it's 15th of Feb 2022. 1 March 2022, 1st March 2022 से you will join the program. You will get placed in August of 2022. We believe that anyone who will join this program will get placed in the very first week of their placement in analytics. That's what we believe. And let's say you get a job of 8 LPA, 10 LPA or 12 LPA. Whatever job you get, if you are happy with the job, fine. If you are not very satisfied with your job, we will help you in getting a job next year in 2023. We will again prepare in January and February of 2023 and apply for jobs in March and April of 2023. Why March and April next year? Because in off-campus companies are looking for immediate joiners. इसलिए हम next year March April में apply करेंगे. And let's say campus से someone get a job of 10 LPA and off-campus he got a job of 15 LPA. Now he can choose whatever job he likes. So let's say he choose a job and his job will start in June or July of 2023. At that moment, this is the time when we will start taking payments from you guys. And again, that will be a very small amount of payment on a monthly basis. So let's say anyone can tell me any number कि उसके कितने की job लगी. 8 LPA, 10 LPA. This is our ISA calculator. कुछ भी बताओ यार. Anyone? 8, 10, 12, 15, कुछ भी. Go on, guys. So 12 LPA. Okay, so 12 LPA. Sergeant, can you put 12 there? So let's say someone gets a job of 12 LPA. So आपकी salary per month पता है 90,000 to 1 lakh होगी. If you get a job of 12 LPA, 90,000 से 1 lakh is the amount that you will receive monthly, and we will take just 5,000, not even 5,000. That is 4879 that we will take from you. So again, this is what we want to emphasize. We are putting our time, we are putting our resources, we are putting our efforts on your career, and once you do well, we will take a nominal amount from you. So that's how our ISA works. So basically you can say my Analytics School is investing in your career, and the better you perform, the better my Analytics School will perform. So it's that kind of relationship in which we will keep on focusing on your progress. So it's not like we will get you enrolled and that's it. Because our success is directly proportional to your success, and your success is directly proportional to our success. That kind of relationship. We are directly proportional. So in that way, we will be committed to our work, and obviously we are quite committed to our work, and we will let you committed to your work. We will we will keep you in a situation that you will be working a lot or every day so that you get a better
job, you get a better role, and obviously it will help us. So this is all about ISA, and this ISA will be taken for 12 months, and post that we won't take any amount from you. Complete detail of ISA will be provided to you when you join the program. Okay, fine. And there's a basic registration fee of 3,000 rupees. It is there just to maintain. Uh, uh, there just to maintain what you can say seriousness for the program. So that if you pay some amount, you will be more serious for preparing. So if that is there. Next slide, please. लिमिटेड बैच आ रहे हैं. Yeah, definitely. Okay. One important point where which Sergeant mentioned here is limited batch size. So as you all saw about our last year's placement and our batch size, this is one thing in which we emphasize upon, that we have a very limited batch size, and right now we are looking for 5 or let's say 7 candidates from NIT Hamirpur, not more than that. And again, we will share a form with you, which if anyone जो भी तुम लोग में से interested होगा to join the program or to know more about the program, fill the form, and post that we will have a discussion call with you. Interview नहीं होगा, एक discussion call होगा, just to know how eager you are to join this program, कितना झील है, कितना तुम एनालिटिक्स में आना चाहते हो, how much effort you are going to put in. It is not like कि जिन लोगों के resume बहुत अच्छे हैं या जिनका बहुत high CGPA है हम उनको ही लेंगे. This is not going to be like this. This is for those people who are highly interested in analytics and who promise us that they will give us a great result, because we believe in providing great result, and that we will ensure every time. So again, fill the form. Chirag will share the form with you guys, and I will request that only those people fill the form जिनका इस साल placement होने वाला है in August of 2022. Other people connect with us on LinkedIn or Instagram, and you can also connect with us and ask any doubt if you have. I have told you a lot of things, but still, if anyone have any doubt, let me put 4 points which will make you sure to join our program. So this slide is all about that only. Why us? So the first thing is guaranteed placement. So whoever join this program will get placed, and if that do not attracts you, in a scenario if you do not get placed, we will return everything. We won't take a single penny from you. We will even return the registration fee of 3,000. The mentorship, the courses, the certificates, everything will be on us. And even if you get a job below 6 LPA, we won't charge you a single penny. So again, we believe that we are not just limited to getting you a job, we are also ensure you getting a job. So let's say someone gets a job of 4.5 LPA, हम तुम लोगों से कुछ भी नहीं लेंगे, because we believe in quality results. And obviously, if we are claiming this big number, then we are quite prepared for that number. हमें पता है कि you will get a job above that number, which I mentioned. Next point is 4-6 months of structured learning. यार जेई के बाद है ना, कॉलेज में कोई नहीं पढ़ता, मैंने भी नहीं पढ़ा था, तुम लोगों ने भी पढ़ाई नहीं की होगी. And that's why these 4 to 6 months of upskilling is very, very important to grow in your career. यहाँ पे you will learn a lot. You will get in contact with the people who thrive a lot. So this is your opportunity to take this train to success and upskill yourself. And even if someone do not join this program, I'm not saying join this program only. I am emphasizing on this point कि आप लोग इस program में नहीं भी आते हो. This is the day 15th Feb. Decide that you are going to 5 months of intensive preparation for your placement, because this will be really helpful. I am in corporate for last 1.5 years, and इस 1.5 साल में जितनी चीजें मैंने सीखी है, उससे डबल चीजें मैंने अपने प्लेसमेंट की तैयारियों में सीखी थी in the month of August to November of 2019. So please start preparing for your placement, start upskilling yourself. The next point is part of a thriving community. When you join this program, you will be preparing with people who are from IITs, other NITs, and top DU colleges, and people who are highly interested in analytics, and people who want to do better, people who want to leave their comfort zone and start focusing into their career. People who do not want to stay a lazy student, they want to become
professional in analytics who want to grow. So if you are part of this community, you will get lots of great contacts, you will get lots of motivation, and obviously it will help again in longer term. And the last point, which we already discussed, you have to pay nothing till you earn. So you have to not worry about anything. You just have to worry about your study. You just have to put 3, 4, 5 hours study every day, and that will be more than enough. I guess that's all from my side. Thanks a lot, everyone, for listening to us with so much patience. We are now open for any queries if you have. So there is one question that, sir, there are many internships around campus ambassador. Sir, are these internship helpful in technical internships? I didn't get you, Chaitanya. So you asked me that there are lot of campus ambassador internships available, right? Yes, sir. Basically, Uh, that are available for second and third year students. Okay, okay, okay. So it actually depends on the job description of that campus ambassador. Around 95% of the campus ambassador roles, they just ask you to share posters in different groups, right? So those are eventually मतलब बिल्कुल भी helpful नहीं होंगे. So you can't learn anything if you are sharing posters in different groups. So, but around 5% of campus ambassador programs are such that they allow you to speak among the other campus ambassadors. They allow you to think, put ideas on table. They ask you to increase the reach of that company in your college. They ask you to give some ideas, put ideas on the table, and even apply those ideas, execute them. So around 5% of the internships, they can be very helpful in terms of learning team management, talking to people, presenting your ideas, and eventually executing them. So just go through the job description. If the first point consists of that you will be sharing posters here and there, then just don't apply it. Okay, sir. Sir, another doubt is that being on a relevant position in like technical clubs in the colleges for like Mhm. position like coordinators or managers, Mhm. does it give an extra edge while applying for internships and When placements? Yeah. So if you compare with the candidate who doesn't have any sort of POR, काफी एज मिलता है तुम लोगों को. द रीजन बीइंग कि if I am an interviewer and I am going to NIT Hamirpur, right? I don't know about any club. I don't know about any events or any fest going on in the college. So if you are writing a coordinator or a organizer of event or secretary of a club or any PR sort of thing, it gives me a sense that you have that kind of responsibility role, and you have managed different students and which has taught you something. So if there's nothing, that will be just a neutral scenario, but if you have points, it will possibly give a great edge when compared to that student who is competing in that interview or placement. That was insightful, sir. And sir, another question is that should the students have some prior skills for applying for a program? No. So as Aryan already mentioned that हम लोग यार CGPA पे भी नहीं जाते, रेज्यूमे पे भी नहीं जाते हैं, और हमने बोल दिया है 5 से 6 बंदे लेंगे हम लोग हमीरपुर से. द रीजन है ये है कि हम लोग मैक्सिमम NITs IITs कवर करना चाह रहे हैं इस साल. हमें हमारा नेटवर्क बढ़ाना है, और रिसोर्सेस भी एक पॉइंट है जिसका हम टारगेट कर रहे हैं 5 6. तो अब ये होगा कि बस रेज्यूमे या CGPA नहीं, हम आप लोग से बात करेंगे और हम लोग जीरो से सिखा रहे हैं. ऐसा नहीं कि कुछ चाहिए, एकदम जीरो से सिखा रहे हैं हम. तो वही एक रीजन है कि बस बोलना चाहिए कि हाँ भाई मैं दिन का तुम्हें 4 घंटे दूंगा. सो एवरीथिंग विल बी डन ऑन स्टूडेंट्स पार्ट, just around practicing and learning. The rest part, thinking, applying, making resume, providing guidance, mentorship, everything will be on us. Okay, sir. I think that's all with the questions. I will Mhm. be now wrapping up, sir, this session. Okay, great. So Chirag, have you just provided the Google form and links, right? Okay. Yeah, So again posting it. hmm.
So, well, it was good to have you both here, sir. This was a very insightful session, and I hope all the students here will make the most out of it. Your journey and experience really did bring value to today's session, and we wish your company continued growth and success. We are thanking you by sharing your precious time with us today and joining us. Thank you so much, sir. Thanks, Chaitanya. Thank you. And I'll just provide you a recording of the session. So as this session was not recorded, but I have different other sessions, I'll just clip it out and I'll provide you. So those who haven't joined, you can just share it.